Question 1. The name amphibia means double heart, double life, double lungs, or double circulation. Correct answer is option B. Amphibia means double life because amphibians spend their life both in water and on land. Question 2. Amphibians are considered the first vertebrates to adapt to life on land. However, they are still dependent on water for feeding, reproduction, breathing, avoiding predators. Correct answer is option B. Amphibians को water require होता है reproduction के लिए. Question 3. The skin of amphibians is typically dry and scaly, moist, smooth, and glandular, covered with feathers, covered with hair. Correct answer is option B. Amphibian skin जो है वो moist होती है, smooth होती है और glandular होती है. Question 4. An important function of amphibian skin is protection against desiccation, cutaneous respiration, producing venom for hunting, all of the above. Correct answer is option B. Amphibian skin जो है वो cutaneous respiration यानी gaseous exchange में important role play करती है. Question 5. Respiratory organs in amphibians can include gills, lungs, skin, all of the above. Correct answer जो है वो है इसका option D. All of the above are the respiratory organs in amphibians depending on the life stage. Question 6. The heart of an adult amphibian is two-chambered, three-chambered, four-chambered, five-chambered. करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी. थ्री चैम्बर्ड हार्ट एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट होता है जिसमें दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है. क्वेश्चन 7. एम्फीबियंस आर एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स, होम्योथर्म्स, हेट्रोथर्म्स. तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है. एम्फीबियंस अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते, सो दे आर एक्टोथर्म्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. Question 8. Process of transformation from an aquatic larva to a terrestrial adult is called metamorphosis, metagenesis, morphogenesis, regeneration. Correct answer है इसका option A. Metamorphosis is the transformation of aquatic larva into adult. Question 9. Larval stage of a frog is called caterpillar, tadpole, nymph, polyvogue. तो correct answer है इसका option B. फ्रॉग की larval stage का नाम है tadpole larva. Question 10. Order of amphibian that includes frogs and toads is Urodela, Anura, Gymnophiona, Testodine. तो correct answer है इसका option B. एनूरा के अंदर जो है वो फ्रॉग्स और टोड्स इंक्लूड हैं और इसका दूसरा नाम है सेलेंशिया. Question 11. Order of amphibians that includes salamanders and newts is Anura, Urodela, Gymnophiona, Sequamata. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी. यूरोडेला जिसका अल्टरनेटिव नेम है कोआडेटा, इसके अंदर प्रेजेंट हैं salamanders as well as newts. Question 12. The order of limbless worm-like amphibians is Anura, Urodela, Gymnophiona, Ophidia. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी. जिम्नोफियोना और एपोडा इज ऑर्डर ऑफ लिम्बलेस वर्म लाइक एम्फीबियंस जो कि हैं सिसेलियंस. क्वेश्चन 13. साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन इंडियन फ्रॉग इज बफो मेलानोस्टिक्टस और राना टिग्रीना, जीनोपस लेविस और सलमेंड्रा सलमेंड्रा. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी. राना टिग्रीना. Question 14. Common Indian toad is Rana tigrina, Buffo melanostictus, Alitis obstetricans और Nectorus maculosus. तो करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी. Buffo melanostictus is the common Indian toad. Question 15. The poisonous gland located behind the eye in toads is called mucus gland, parotid gland, sudorific gland, or sebaceous gland. Correct answer is option B. Parotid glands are the poisonous glands present behind the eye of toads.
Question 16. Vocal sac in male frog is used primarily for storing food, amplifying mating calls, buoyancy, or respiration. The correct answer है इसका ऑप्शन बी. वोकल सैक्स जो मेल फ्रॉग्स के अंदर होते हैं they are used for amplifying mating calls. Question 17. Tympanum in a frog is a membrane associated with eye, ear, nose, heart. Correct answer is option B. Tympanum of a frog is associated with hearing, so it is present in ear. Question 18. During metamorphosis in frog, tadpole tail is absorbed by a process called phagocytosis, apoptosis, necrosis, autolysis. The correct answer is option B. Frog tail is tadpole tail is absorbed by apoptosis, which is a programmed cell death. Question 19. Excretory product of adult amphibians is primarily ammonia, urea, uric acid, guanine. करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी. एम्फीबियंस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया. क्वेश्चन 20. द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और मैमोलॉजी. तो करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी. एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स की स्टडी को नाम देते हैं हार्पिटोलॉजी का. Question 21. A frog tongue is attached at back of the mouth, front of the jaw, middle of the mouth. It is not attached. The correct answer is option B. Frog tongue is attached to the front of the jaw. Question 22. Nitrogenous waste excreted by tadpole is urea, ammonia, uric acid, keratinine. Correct answer is option B. टेडपोल का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया है, जबकि एडल्ट फ्रॉग का है यूरिया. क्वेश्चन 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन? न्यूट, सिसिलियन, सलमेंडर, साइरिन. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी. सिसिलियंस आर द लिम्बलेस एम्फीबियंस जो कि ऑर्डर जिम्नोफियोना से बिलोंग करते हैं. Question 24. Phenomenon where some salamanders retain larval characteristics like gills throughout their life is called metamorphosis, neoteny, regeneration, parthenogenesis. Correct answer is option B. Neoteny is the process in which salamanders retain larval characteristics throughout their life, and it is also known as pedomorphosis. Question 25. The axolotl is a classical example of an amphibian that exhibits complete metamorphosis, neoteny, viviparity, estivation. Correct answer is option B. Neoteny is present in axolotl, जो कि एक जुवेनाइल लार्वा है सलमेंडर का. Question 26. Amphibians that lay eggs on the land protect them by hard shells, lay them in gelatinous masses or foam nest, or burying them in sand or internal gestation. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी. एम्फीबियंस जो कि लैंड पे एग्स ले करते हैं दे ले देम इन जिलाटेनियस मैसेस और इन फोम नेस्ट टू प्रोटेक्ट देम. Question 27. The midwife toad is unique because the female gives live birth, the male carries the egg wrapped around his legs, it does not require water for reproduction, it is mammal. Correct answer is option B. Midwife toad का जो मेल है वो एग्स को रैप करता है अराउंड देयर legs. Question 28. Frog Rhinoderma darwini, Darwin frog, is known for its unique parental care where the female carries the egg, male carries the developing tadpole in his vocal sac, or it builds a nest of foam, or it gives live birth. Correct answer जो है वो है इसका ऑप्शन बी. Male carries the developing tadpoles in his vocal sac. Question 29. Amphibian that is entirely aquatic and even gives birth to live young in water is common toad, African collared frog, Suriname toad, or tiger salamander.
करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, सूरीनाम टोड, जो कि पाइपा पाइपा इसका जीनस साइंटिफिक नेम है. It is the amphibian that is entirely aquatic and gives birth to the live young in water. Question 30. Longest amphibian is frog, salamander, Sicilian toad. तो करेक्ट आंसर जो है इसका है ऑप्शन बी, चाइनीज सैलमेंडर जो है वो लॉन्गेस्ट एम्फीबियन में आती है. Question 31. The largest frog in the world is bullfrog, Goliath frog, poison dart frog or common frog. Correct answer है इसका ऑप्शन बी, Goliath frog is the largest frog in the world. Question 32. Bright coloration of poison dart frogs Dendrobatidae serves as camouflage, warning coloration, matte attraction, heat absorption. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, पॉइजन डार्ट फ्रॉग के अंदर जो ब्राइट कलरेशन है वो उसको वार्निंग कलरेशन के तौर पर यूज़ करते हैं और इस प्रोसेस को नाम देते हैं एपोसीमाटिज्म का. Question 33. Poison from the poison dart frog is used by indigenous people for medicine, tipping, hunting darts, dye, food flavoring. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, टिपिंग, हंटिंग, डार्ट्स. Question 34. The group of amphibians that has a tail throughout its life is Anura, Urodela, Gymnophiona, all amphibians. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यूरोडेला, जिसके अंदर सलमेंडर्स और न्यूट्स आते हैं. दे हैव टेल थ्रू आउट देयर लाइफ. Question 35. Phenomenon where amphibians can regrow lost limbs is called metamorphosis, regeneration, autotomy, budding. Correct answer है इसका option B. Regeneration is a process through which amphibians regrow their lost limbs. Question 36. The structure that helps a frog in jumping is its powerful forelimbs, hind limbs, tail muscles और jaws muscle. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, फ्रॉग के जो हाइंड लिम्स हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं और इसको जंपिंग में हेल्प करते हैं. Question 37. The alimentary canal in frog opens into cloaca, which is a common chamber for the passage of digestive waste only, digestive waste, urinary waste, and reproductive products, urinary waste only, or reproductive products only. The correct answer is option B. जो cloaca है, it is a common passage for all the waste produced in frog body. Question 38. Number of chambers in a frog's heart is 2, 3, 4, 5. करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी, कि फ्रॉग के हार्ट के अंदर टोटल 3 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 अपर एट्रिया और एक लोअर वेंट्रिकल होता है. Question 39. Blood vascular system of a frog is an example of open circulation, closed circulation, single circulation, incomplete double circulation. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, फ्रॉग के अंदर जो सर्कुलेशन है वो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन है. Question 40. Digestive system of an adult frog is herbivorous, carnivorous or omnivorous, detritivorous. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, adult frog और carnivorous. Question 41. Digestive system of tadpole is carnivorous, herbivorous, omnivorous, parasitic. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, लार्वा फ्रॉग का जो है वो हर्बीवोरस है जबकि एडल्ट फ्रॉग कार्निवोरस है. Question 42. Male frog can be distinguished from the female by the presence of larger size, vocal sacs and nuptial pads, a wider mouth or brighter coloration always. करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी, वोकल सैक्स एंड नुप्शियल पेयर्स जो है वो मेल फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट होते हैं बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन फीमेल. Question 43. Process in which the male frog embraces the female to stimulate the egg laying is called copulation, ampluxus, spawning, fertilization. The correct answer है इसका ऑप्शन बी, ampluxus.
Question 44. A frog respires through its skin when it is active on land, hibernating underwater, in the tadpole stage, or calling for a mate. तो करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी कि जब फ्रॉग हाइबरनेटिंग स्टेट में होता है अंडर वाटर it respires through its skin. Question 45. Transparent membrane that covers a frog eye underwater is tympanum, nictitating membrane, cornea, iris. Correct answer है इसका ऑप्शन बी nictitating membrane. Question 46. Sense organ that helps a frog maintain equilibrium is eye, internal ear, lateral line system or skin. The correct answer is option B. Internal ear is the sense organ that helps frog to maintain equilibrium. Question 47. The scientific name of African collared frog widely used in biological research and pregnancy tests in the past is Xenopus laevis, Rana temporaria और बफो बफो एम्बिस्टोना मैक्सिकेनम। तो करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन ए जीनोपस लेविस जो है ये अफ्रीकन क्लाउड फ्रॉग है जिसको बायोलॉजिकल रिसर्च और प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर यूज़ किया जाता था। Question 48. A major threat to global amphibians population is the fungal disease, white nose syndrome, chytridiomycosis or Dutch elm disease, rust fungus disease. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी काइट्रीडियोमाइकोसिस एक मेजर थ्रेट है ग्लोबल एम्फीबियन पॉपुलेशंस के लिए और ये एक फंगल डिजीज है। Question 49. The term for the state of dormancy during winter in amphibian is estivation, hibernation, diapause, sleep. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी विंटर के दौरान डॉर्मेंट स्टेट को नाम देते हैं हाइबरनेशन जबकि समर सीजन में होती है एस्टिवेशन। Question 50. The term for the state of dormancy during summer in amphibian is known as estivation. So correct answer is option B.